organized by UGC HRDC, DTU Gorakhpur University. I now request Dr. Kriti Srivastava ma'am to extend a formal welcome note to our eminent speaker. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning and very warm welcome to all my fellow colleagues and seniors in the 8th day of second induction faculty program organized by HRDC, DTU University, Gorakhpur. Today, I have a privilege to introduce Professor Omkarnath Upadhyay sir as our session guest lecturer. Now, let me give you a brief introduction of Upadhyay sir. Omkarnath Upadhyay sir, presently working as professor in Department of English and Modern European Languages, Lucknow University, studied in Banaras Hindu University, Varanasi at BA in English, MA and PhD degrees, and subsequently taught at Government PG College, Purdwar, Garhwal and KS Saket PG College, Faizabad. He has supervised more than 30 PhD scholars and 8 scholars are working at present time with him. He has attended about 50 national and international level conferences and seminars. He is the consultant of more than 30 universities with different responsibilities as expert of PhD thesis examiner, expert board of studies and research, department committee. Professor Upadhyay sir is the UGC nominee of the governing body of PVKM College Chittor, an expert of autonomous status of SRR College, Telangana. Appointment by the UGC. He has published 2 books, Perspectives of Indian Diaspora and English Poetry of the Movement. His English Poetry of the Movement has been granted with rupees 50,000 by the English and Foreign Language University, Hyderabad for wide circulation in all the libraries of central government. He delivered several lectures in central state universities, academic institutions, and academic staff colleges, and chaired many sessions in the conferences. He has also worked on a major research project on literature on Indian diaspora in Mauritius. In connection with the project, he also visited DePaul University, Chicago, USA to attend an international conference. Sir's area of interest is the 20th century English literature, literary criticism, Indian literature in English diaspora literature, and theatre, especially Indian, African, Mauritian, and Australian as well. Now, I would like to request Sir to please continue. Sir, please. Thank you, Dr. Kriti, for your introduction. I am really indebted to Professor Ajay Shukla ji, the course coordinator of this FIP workshop. I am also very thankful to Dr. Manish Pandey, who is ever a very enthusiastic and very inquisitive scholar. I'm also thankful to the University of Gorakhpur, then the Upadhyay University, to provide me this platform to share my thoughts and sentiments in this workshop on the topic Indologic language pedagogy versus English. May I share with you that this presentation is not only meant for English scholars, but of multiple subjects and streams of knowledge. Keeping in view my presentation and deliverance may be in 3 languages. English as mode of expression sometimes, as well as Hindi and Sanskrit. The topic is
Indologic language pedagogy versus English. So what is Indologic? ये इंडोलॉजिक क्या है, जिसे हम कभी कभी आधुनिक साहित्य की भाषा में साउथ एशियन स्टडीज कहते हैं. एक्चुअली साउथ एशियन is nothing but greater India. तो भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं, ग्रंथों, इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन जिस विधा में होती है उसे इंडोलॉजिक कहते हैं. हमने 4 विषय लिया है यहाँ पे: भाषा, ग्रंथ, ग्रंथ आई मीन टू से शास्त्र, फिर इतिहास. इतिहास और हिस्ट्री दोनों अलग है, इस पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज कल्चर, which is highly abused without its proper understanding. Actually, India is not a geographical land. India is a cultural entity, and it is the culture binds all the parts of India. Uttaram yat himadasya. I'll just explain it later on. Well, second component is language. Actually, language is very important component for all the streams of knowledge. उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्यस्य रक्षणं वर्षं तत् भारतं नाम भारतीयत्व संतति. That is Bharat. So language is that component in which all the streams of knowledge is given. Whether it is language is a medium of expression of thoughts and ideas. So here we find language that is very important. And next component is pedagogy. Pedagogy को हम हिंदी में शिक्षण शास्त्र भी कहते हैं. मोड ऑफ टीचिंग. और इस उद्बोधन में भाषा और भारतीयता और भारतीय शिक्षण पद्धति वर्सेस इंग्लिश का अंग्रेजी से क्या संबंध है, या अंग्रेजी कहाँ उनके सामने टिकती है, रुकती है, इस पर हम विशेष रूप से विचार करने वाले हैं. As far as Indian School of Knowledge is concerned, it is based upon spirituality and culture. पाश्चात्य में विज्ञान और अध्यात्म दो अलग अलग विधाएं होती हैं. 20th सेंचुरी में तो यहां तक कहा गया कि
अध्यात्म का स्खलन हो रहा है और विज्ञान का उत्थान हो रहा है। अध्यात्म का पतन होता है और विज्ञान का विकास होता है। भारतीय दृष्टि में अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। जो हमारा धर्म है वह विज्ञान पर ही आधारित है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी विज्ञान के विषयों की शिक्षा दी गई है, दी जाती है। इसलिए भारतीय दृष्टि में विज्ञान और धर्म दोनों अलग अलग नहीं है। मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आता है, आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। भुवनानि पश्यन्, संपूर्ण विश्व को की चिंता करता है। तो भारतीयता ही एक ऐसी सोच है जो संपूर्ण विश्व की चिंता करती है, जबकि अन्य देश पाश्चात्य संस्कृति ही क्यों न हो, उन्हें सिर्फ अपने ज्योग्राफिकल लैंड की चिंता होती है। इंडियन और इंडोलॉजी इज बेस्ड अपॉन ज्ञान। हमारे यहाँ ज्ञान की हमारे यहाँ 3 विधाएं हैं जिसमें ज्ञान एक है, दर्शन, ज्ञान और विद्या। भगवत गीता में ज्ञान के विषय में कहा गया, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते ततः। यानी केवल ज्ञान मार्ग की चर्चा नहीं की गई, बल्कि मोक्ष के लिए, जो कि मनुष्य का अंतिम अभिप्राय होता है, उसमें तीनों मार्ग की चर्चा की गई। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वहीं पर जब फिर भी नहीं समझ में आता है अर्जुन के, तब उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अरे इस प्रकार से ज्ञान हमारे यहाँ एक विधा है। अगली विधा है विद्या। विद्या के बारे में हम सभी जानते हैं, कहा गया कि सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें मुक्ति प्रदान करे, ऐसे विद्या, वही विद्या होती है। विद्या इज ए डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज। We are indulged and involved in different disciplines. So we get knowledge in a specific discipline that's called Vidya. भर्तृहरि ने तो कहा, knowledge constitution of inner self। जो हमारे आत्म तत्व है, जो इनर सेल्फ है, उसका प्रकाश में लाना ही ज्ञान है। और
ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। सेंसेस, इंद्रियस, मन, माइंड एंड इंटेलेक्ट, बुद्धि। तो बुद्धि, ज्ञान, विद्या, मन, दर्शन, चिंतन, मनन, इन सब का अलग अलग भाव है और इनका सब अलग अलग अभिप्राय है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि हमारी चिंतन परंपरा में इतिहास की चर्चा की गई है। हिस्ट्री तो वेस्टर्न है, इट्स नॉट इंडियन। इतिहास क्या है? तो इतिहास के विषय में कहा गया, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम इति कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। इतिहास ऐसा ही था, as it was. So objectivity as important component of itihas. But history is something else. When the events are presented by a person in his own perspective, that is itihas, that is history, his story. Story is there, but presentation is different. Next important thing to be informed, we shared with you, that in Indian knowledge system, we find soul is a part of God. ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल। जबकि वेस्ट में अगर आप देखें, हम सभी पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं, उसमें पाते हैं कि एडम एंड ईव वर पनिश्ड बाय गॉड, and we are the descendants of Adam and Eve. So we are also base-born sinners. So in this way, the knowledge of Indian school of knowledge is very essential for all the scholars, not scholars, I should say, all the Indians. Having the citizenship of India does not mean only Indian. Knowing India is important. Living in India is not important. Knowing Indian thoughts, Indian values, Indian culture, Indian history, itihas. Friends, further I'd like to discuss something about language. Let me start here with 2 classical languages which give birth to all the languages. When we talk of English language, we look towards Greek. We find 5 vowel sounds, A, E, I, O, U, derived from 5 Greek words: alpha, epsilon, iota, omicron, and epsilon. A for alpha, E for epsilon, I for iota, O for omicron,
and U for epsilon. English language consists of 26 letters, whereas we find, or alphabets we can say, we find 44 sounds. How unscientific it is. But Sanskrit language is based upon science. Find the first Hindi dictionary is Amarkosh. A very voluminous and very rich and profound dictionary, produced in time quite past. The first English dictionary was written by Dr. Samuel Johnson in the 19th and the 18th century. In this connection, I also like to share structural order of 3 languages, syntactics of 3 languages, syntactical order of 3 languages. As far as English language is concerned, syntactical order is SVO, subject, verb, object. In Hindi, we find SOV, subject, object, then verb. Then we have third, the most powerful and richest language is Sanskrit, in which writer is free. I'd like to give the example of Kalidas Vidyottama dialogue. Vidyottama said to Kalidas, Asti kaschit vag vishesha. And Kalidas was such a great scholar. But I mean to say that asti, verb, the sentence begins with the word asti, verb. Kaschit vag vishesha. Kalidas wrote 4 important magnum opus, starting with 4 words. Astuttarasham Dish Devadatma Himalayo Naam Nagadhiraja. और रघुवंश महाकाव्य की शुरुआत किया उन्होंने वाग विशेषा से. वाग अर्थावयो संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरम. Friends, next point which I'd like to share with you, it's very important, that is Indian pedagogy. Teaching method of English and teaching method of Indian school of thoughts. Totally different. When we talk of learning skills in English, we find 4 learning skills only: listening, speaking, reading, and writing, which we call LSRW, out of which 2
that is listening and reading, they are receptive, whereas writing and speaking, they are productive skills. We learn through listening. We learn through reading. We produce through speaking, and we produce through writing. But in Indian school of thoughts, this lecture method is an important component of British school of teaching, learning process. In Indian school of process, we find Guru Shishya Parampara. This Guru Shishya Parampara is very powerful in the past. In the past, we find, in the past history of India, we find Guru Shishya Parampara. And it is very auspicious. When I think of mode of teaching in Indian pedagogy, we find three important components. Apart from LSRW, it is totally different. That is Chintan, Manan, and Shabda Pramar. Meditation is an important mode of learning. We learn a lot when we don't find any way of the problem, any solution of the problem. In Indian pedagogy, we go for dhyan, we go for meditation, we go for thinking. But in Western perspective, there's no space for meditation, there's no space for Chintan, no space for Manan. Some space for Shabda Pramar. In dialogic, see, Indian pedagogy is based upon dialogue. गुरु और शिष्य के बीच में डायलॉग हो रहा है. मैं इसका उदाहरण बाद में दूंगा, मैं नाम केवल लेता हूं दो, प्रश्नोपनिषद और कठोपनिषद. मैं उसमें बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं तीन विषयों को और लेना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इंडियन पेडागोजी में डायलॉग के साथ साथ शास्त्रार्थ की भी स्थान दिया गया है. ये जो हमारे इस समय MCQ चल रहा है, MCQ is the easiest mode of evaluation. Where there is no space for knowledge, only space is given to the importance. Space is given, importance is given to information. And this digital humanities and digital apparatus like
कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ई-रीडर, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, these are all they all share information. There is no dearth of information in the 21st century. I honestly accept it. If you want to inquire anything, just within no time, your Google Baba is ever ready to respond to you. But there's no scope for knowledge. Knowledge provides pleasure. Information provides you satisfaction. And the ultimate objective of teaching learning process is pleasure. Friends, pleasures of many kinds. So what kind of pleasure we find through knowledge? Through knowledge we find aesthetic pleasure, सौंदर्य सुख. इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम. सुंदर वही है जो सत्य है, और सत्य वही है जो शिव है, जो कल्याणकारी है. अगर कल्याणकारी नहीं है तो वह सत्य नहीं है, और जो सत्य नहीं है वह सुंदर नहीं है. इस प्रकार हम पाते हैं कि इंडियन पेडागोजी में एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया, क्रिएटिविटी बेस्ड एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया. वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में केवल एक टीचर इज an instrument, but in Indian component, teacher is not an instrument. Teacher is the torch bearer. Friends, being teacher, it is our duty to give a right path to our students. When I talk of Indian languages, let me discuss in brief. Why Indian languages? What is the beauty of Indian languages? What are the merits of Indian language? जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो अगर हम वेस्ट पे देखते हैं, वेस्ट को देखते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज? इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. It's not sufficient because it does not lead towards spirituality, towards moksha. Here we find in Indian school of thoughts, paravidya, aparavidya, physical and metaphysical. We have metaphysical school of poets, but here and there you find some elements of metaphysics there. It never leads towards moksha. Any language begins with ध्वनि. ध्वनि के विषय में अगर हम देखें तो आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक एक माइलस्टोन है.
जो ध्वनि पर प्रकाश डालता है. We find in English also sound system, but the sound system of English differs from or cannot reach to the level of Dhvanyalok of Anandavardhan. उसके बाद आता है अक्षर. जो क्षर ना हो, जिसका क्षरण ना हो, जो समाप्त ना हो, चाहे वो व्यक्त हो या अव्यक्त हो. इसीलिए हमारे यहां कहा गया अक्षर ब्रह्म. अक्षर क्या है? ब्रह्म है. इस अक्षर की उत्पत्ति कहां से होती है? तो इसकी उत्पत्ति जिसे पाणिनि के अष्टाध्यायी में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है कि माहेश्वर के जो सूत्र उन्होंने डमरू बजाया और जो 14 सूत्र निकले, अयों रेलरेक एयों अयो छावरक खब चटत चटतव खपे सक्षर हल. These are 14 डमरू sound, and from there the alphabet akshar comes out. From akshar we find words. आगे शब्द को भी ब्रह्म कहा गया हमारे यहाँ. शब्द के बाद आता है सिंटैक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉलोड बाय व्याकरण. व्याकरण की दृष्टि से लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत का मूल ग्रंथ है जो हमें व्याकरण पर प्रकाश डालता है. हमारी भाषा का यहीं पर अंत नहीं होता है, बल्कि हमारी भाषा में काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, रस शास्त्र, छंद शास्त्र की भी चर्चा की गई है. भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, जिसकी समालोचना, अब एक और पद्धति आ गई, पेडागॉजी. ध्यान में आया? समालोचना, टीका. इट्स ऑल्सो स्कूल ऑफ लर्निंग. तो अगर जब टीका की बात आती है तो मुझे जो है वाचस्पति मिश्र की भामती टीका याद आती है. अकेले राजेंद्र. भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा. सो हु वाज भरत मुनि? When we talk of नाट्य, it starts from अभिनय. नाट्य शास्त्र को हमारे यहाँ पंचम वेद कहा गया, फिफ्थ वेद. ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. फिफ्थ वेद इज नाट्य वेद. So who was Bharat Muni? Bharat Muni is not an individual. According to Kapila Vatsyayan, Bharat Muni, see, Muni is saint. Saints are considered as seers, mantra drashta. And who was Bharat? Bharata.
भाव, राग और ताल, जहां पर भाव, राग और ताल का सम्मिश्रण होता है वही भरत होते हैं। Think of Aristotle's concept of tragedy. Where does it exist in comparison to Natya Shastra Bharat Muni? They are very scanty and specific knowledge system. तो भरत मुनि ने रस शास्त्र की भी चर्चा किया है, जबकि दंडिन ने काव्य शास्त्र लिखा। संस्कृत में तो यह भी कहा गया, उपमा कालिदासस्य भारवेत अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति गुणा। So Dandin wrote Kavya Shastra. You know, earliest poetry of the world in any language is Rigved. मुझे बहुत कम आता है, जो थोड़े बहुत जान पाए हैं उसे आपसे शेयर करने की धृष्टता कर रहा हूं। We find the concept of Devata in Rigved and remind of one Devata, that is Agni Devata. Agni Mende Purohitam Yagyasya Devanrityajam Hotaram Ratnadhatam. फ्रेंड्स, जब हम अंग्रेजी के छंद साहित्य की तरफ देखते हैं, प्रोसोडी को देखते हैं, देयर वी फाइंड ओनली स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, iambic, trochaic, anapest, and so on, and finished. But in Indian schools we find a variety of chanda, and that is the beauty of poetry. All knowledge is constituted in language, as I have already said. Great beauty has been attached to the study of language in all its dimensions: sounds, words, sentences, meters, etymology, and meaning. When I talk of etymology, we think of translation. Well, I don't know whether I'm right or wrong, but most of the times when you think of translation, this, again, I should, with all apologies, I should say that every language has its own words and every has its own soul in itself. And if you change the word in the other language, sometimes we may kill its soul, S-O-U-L. I'll give the one example only. I'll give only one example. And then you find, I remind of a statement of a theorist. एक मामले में वेस्ट के राइटर्स, थिंकर्स हमसे स्मार्ट थे,
कि उन्होंने चाहे जो सोचा, कम सोचा, अधिक सोचा, उसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे ढंग से किया। मैंने ऐसा सोचा। और हमारे यहाँ तो ज्ञान की परंपरा रही, उसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन का चांस नहीं होता है। मार्शन मैक्लुहान coined the term global village, and we are proud to say this is the theory of Martin McLuhan. I don't know whether global is of Marshall McLuhan or village. Credavanto Vishwamaryam has already been said. So when he says about global, I think it has already been said in Indian school of thoughts. विलेज तो उनका है ही नहीं। विलेज का कॉन्सेप्ट, ग्राम का कॉन्सेप्ट तो इंडियन है। तो चाहे वैश्विकवाद हो, वैश्विकता की बात हो, या ग्राम की बात हो, दोनों इंडियन है। Twenty-first century finds Western critics talk of death of the author. हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले की परंपरा चली आ रही है। ऑथर खुद को नहीं, बल्कि विचार को इंपॉर्टेंस। In the West, we find theory of reader response theory. इंडियन स्कूल में तो सहृदय पाठक की संकल्पना ही की गई शुरू से ही। इस प्रकार से मुझे लगता है कि इंडियन लैंग्वेजेस का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। ये विषय जरूर है। मुझे एक बात याद आती है कि जब द टेम्पेस्ट में कैलिबन कहता है, You taught me the language and the benefit is that I can abuse you in your own language. So we can use this platform of English language to proliferate Indian school of thoughts. And don't think that is I am saying all these things. It has already been said by so many scholars of the East of India. According to linguists, there are two oldest branches of language, and they are Brahmi and Kharoshti, जिसे वेस्टर्न थिंकर्स ने भी हाईलाइट किया है। Sir George Grierson wrote 12 volumes on title Linguistic Survey of India, highlighting 179 languages and 544 dialects found in India. ये वैसे तो हमारे यहाँ कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पे बानी, और हमारा अकेले भोजपुरी पर्याप्त तो अंग्रेजी के पीछे ढकेले बदले। So in this way, please keep in mind and be proud of your knowledge, proud of your school of thoughts. Don't underestimate. It only happens because we have very
least knowledge of our own knowledge, school, Indian school. Please learn. मैंने पहले दो, हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गया, मैंने कहा कि ऋग्वेद is the oldest poetry of any language and Shatpat Brahman is the oldest prose of any language. Friends, I had already told you to discuss something about teaching methodology, pedagogy in Indian Upanishads. And I am going to mention only two examples. One is Prashnopanishad. There is no monologue in Indian school of pedagogy, of teaching. There is dialogue, संवाद. हमारे यहाँ संवाद की परंपरा है. वेस्ट में विवाद की परंपरा है. विवाद की परंपरा है. तो प्रश्नोपनिषद के जो सेंट हैं, गुरु हैं, देखो हमारे गुरु भी कैसे होते हैं. प्रश्नोपनिषद के गुरु है पिप्पलाद. एंड हु वाज पिप्पलाद? जो पीपल की गोंद खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनका नाम पिप्पलाद था. 20th सेंचुरी में हमारे पास 21st सेंचुरी में फाइंड सेंट्स लाइक कल्पात्रे जी. तो एक बार प्रश्नोपनिषद इज अ स्कूल ऑफ अथर्ववेद. ये अथर्ववेद की एक परंपरा है. तो इस प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद के पास 6 जिज्ञासु शिष्य आते हैं. जिज्ञासु शिष्य वो कौन थे? वो थे सुकेशा, शिवी कुमार, सत्यकाम, सौर्यानग, कौशल्य, भार्गव और कबंधी. ये 6 शिष्य जब आते हैं गुरु के पास, पिप्पलाद के पास, और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, तो पहले ही गुरु कहते हैं, हमारे यहाँ शिक्षक या योग्य गुरु के साथ योग्य शिक्षक का भी होना, अयोग्य शिष्य का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है. तो गुरु पिप्पलाद कहते हैं कि नहीं, तुम लोग हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण तो कर रहे हो, 1 साल बाद आना है. 1 साल बाद क्यों? कहा कि 1 साल तुम्हें अभी गुरु सेवा करनी है. आज के शिष्य, आज के गुरु अगर कहते हैं कि 1 साल बाद आना, तो उसी समय कोर्ट हमारा जो है जेल भेज देगा. कहेगा कि तुम हैरासमेंट कर रहे हो. आप 1 सप्ताह बाद कह के देखो कि पता लगेगा. वो अपना वो ले आता है बिल साइन करने के लिए, मना कर दीजिए, फिर तुरंत जाकर हेड से कंप्लेंट हो जाएगा, वीसी क्या चला जाएगा. तो ये हमारे यहाँ धैर्य, पेशेंस, संयम. तो कहते हैं पिप्पलाद, अभी तुम्हें ब्रह्मचर्य,
संयम, श्रद्धा, आस्तिकता की आवश्यकता है। 1 साल बाद वो आते हैं, फिर जब वो प्रश्न करते हैं तब जाकर के पिप्पलाद उनका उत्तर देते हैं। प्रश्न भी कितना कठिन था। तो प्रश्न पूछना, प्रश्न की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ देंगे तो वह जो है औचित्यहीन हो जाएगा। हमारे यहाँ औचित्य का बहुत महत्व है, वह औचित्यपूर्ण होना चाहिए। तो प्रश्न पूछता है शिष्य कि अच्छा गुरुजी ये बताइए कि सोए में कौन जागता है, सुसुप्ति में कौन जागता है, या अगर हम और उसको स्पष्ट करें, रात्रि में कौन जागता है या निशा में कौन जागता है? तो गुरु ने बड़ा विलक्षण उत्तर दिया, या निशा सर्वभूतानां तस्याम पास जागृति संयमी। इसी प्रकार से उन्होंने फिर अक्षर की उत्पत्ति पर चर्चा किया। तब उन्होंने, पिप्पलाद ने, पितामह ब्रह्मा और महेश्वर शिव के डायलॉग को बताया कि किस प्रकार से अक्षर की उत्पत्ति होती है 8 क्षणों में। दूसरा उदाहरण हमारे पास है कठोपनिषद का, जिसमें नचिकेता यम के पास जाता है, 3 दिन रुकता है। तीसरे दिन जब यम आते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि ये ब्राह्मण बालक 3 दिन से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, तो उन्होंने कहा 3 वरदान मांगो। तो उसे 3 वरदान मांगा। पहला वरदान तो ये था, जिसका महत्व बहुत कम है, कि यह हमारे पिताजी जो मुझसे नाराज हैं वह खुश हो जाए। दूसरा, मेरे पिताजी का राज्य वापस हो जाए। तीसरा प्रश्न किया उसने, तीसरा वरदान नहीं मांगा। Although Yam was prepared to give anything, but being a student, being a shishya, being a learner, he inquired about आत्मा। आत्मा क्या है? ये हमने काफी घुमाया फिराया बहकाया, कहा कि कहाँ तुम यम के उसके चक्कर में पड़े हो, आत्मा के चक्कर में पड़े हो, और कुछ पूछ लो। तो उसने कहा नहीं, आत्मा के बारे में। तब उन्होंने कहा अरोरणीयान महतो महीयान धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, दैट इज आत्मा। So my friends, I know you are very much indulged and involved in this, and I wish that I should give some time to you to get your questions, not questions, actual inquiries. If I'm able to just respond, well and good, otherwise I'll just respond later on. But at last, not the least, keeping in view our time limit, I wish to come on the conclusion part of this lecture. Let us see new education policy which the government is introducing. Actually, sometimes 2 things are very important.
here I would like to talk about, which I appreciate very much, and which is totally based upon Indological system. That is 64 kala, 64 arts. It's not only confined to few subjects, but the government is providing a broader platform of learning. And second thing which I'd like to share with you, which I sometimes have already said, that I like it very much, to combine